Are we live? Yes, we are live now. Okay, great. So, good evening, everyone. Very warm welcome to all those who are online and who would be watching this session later. This is Ranjana Tripathi. I'm one of the advisory member of RTC, that is Right to Cleanliness. And I'm extremely happy to be moderating this session as we have an amazing guest speaker today with us, Dr. Farah Adam. Good evening, Dr. Farah. Good evening, Ranjana ji. Thank you so much for having me. Before we start the session, I would like to share a brief and concise insight about RTC for all the viewers. The Right to Cleanliness is a project under Karma Foundation. This project is a true example of women empowerment. The women inmates of Sabarmati jail manufacture biodegradable low-cost sanitary pads for underprivileged women and girls. Along with providing these means, RTC regularly conduct awareness programs on general health. Also, one of our planned session in the last committee meeting, we came up with this, like we would be inviting you as a guest speaker. And also, it's my humble request to the viewers, irrespective of the gender, kindly share this video session link with all the women and girls in your family if they are not able to watch now. Also, the women, those who are watching, it's again a humble request to you to spread the information shared here as we are going to discuss about basic insight and also in an expanded form of insight through Dr. Farha. And you can share it to the underprivileged women or girls in your surroundings, for example, your maids, your house staffs, or anyone you come across to. So now coming back to Dr. Farah. Dr. Farah is a family physician at Narayana Health, mother of two, and a best-selling author of the book Newborns and New Moms. So you have the book, yes. So we can see the book, and she is passionate also about postpartum care of the mother and breastfeeding support. Her social media avatar, Mom's Time, is devoted to making mothers comfortable with their journeys and empowering them. She also will tickle your funny bones with her Bollywood parodies, which come with a dose of a social message. You know, Dr. Farah, this was the only thing which I was looking forward to, because what happens always in past, whenever we speak about women health, it's mostly considered as a gloomy, some kind of challenges, some kind of problems. Like even if a girl comes in a phase of periods, menstruation period, or if it is a kind of up and down transition in the body during their menstrual time, or if it is even a menopause, why we always say or consider them as an issue. So my intention for this particular session was, why not we just take a positive aspect of all these transitions happening in women. Like first time when you get the period, again it is a blessing. It is something which you should cherish, which you should love. Until you stop taking care of those things, it becomes an issue. So we would start with the basics understanding from your aspect, how in your language, in your term, the way you are always making, entertaining a small kind of parody for every women health thing. It is actually, it is one of the way where we don't take stress out of it, but we just love it. So, in your terms and in your language, how would you describe all these transitions in a woman, starting from the girl stage where they get first time they get their menstruation? So, over to you. Okay. Ranjana ji, I think my voice is echoing through yours, through the No, speaker. So just put on I'll mute. just mute myself. You can You can carry use headphones. Either way is fine. Okay. So thank you, Ranjana ji, for thinking of me for today's session. And जो parody है मैंने आपके लिए specially लिखा है, let's keep it for the end. Let's make the viewers wait for it till the end. And the first thing, as a doctor, I have conducted this session twice before on menstrual hygiene. And the first thing that I want to start with always is the basic anatomy, because yahin pe hum maar kha jate hain. There are men and there are women in the childbearing age, वो मतलब 20 cross कर गए हैं, and they did not know about the existence of the vagina. What is it? They don't know there are 3 openings down there. And I always make my entire audience uncomfortable by telling them ki pehle we'll start with normal anatomy. So the first opening in the front, right where the clitoral hood is where the urine comes from. The second opening is the vagina. That's where the menstrual blood comes from. And the third opening is the anal opening, where the feces, या stool, potty, जो भी आपको कहना है,
that comes from. So that's the first thing, to get the concepts right. अगर हम ये समझ लें तो हमको we can cover everything from urine infection, we can cover everything from menses, as well as how to take care of your hygiene after you relieve yourself bathroom में. मैं जरा हिंदी इंग्लिश मिक्स में बात करती हूँ, ठीक है, so that everyone gets it. So first things first, कि हम यूरिन के बाद या मोशन के बाद, you know, how we wash ourselves, that is important. And हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो एनाटॉमी है औरतों का, इट इज डिसएडवांटेजेस कंपेयर्ड टू मेन, क्योंकि हमको ये प्रॉब्लम है कि हमारा जो यूरिन का जो एरिया है, दैट इज वेरी क्लोज टू द एनल ओपनिंग एज कंपेयर्ड टू मेन. उन लोग का ये यूरिन का जो ट्यूब है, दैट इज मच लॉन्गर बिकॉज इट क्रॉसेस द पीनस. फॉर अस इट इज मच शॉर्टर. तो हमारे लिए इन्फेक्शन होना बहुत आसान है. लाइक इफ यू यूज द फॉसेट, या अगर आप वेस्ट में हैं और आप टॉयलेट पेपर यूज करें, एंड इफ यू जस्ट वॉश योरसेल्फ फ्रॉम बैक टू फ्रंट, मोर देन एनफ टू गिव यू यूरिन इन्फेक्शन. दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट है कि पीरियड्स में, प्रेगनेंसी में, इसमें आपके हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंडर देयर आर सम चेंजेस इन द यूरिनरी ट्यूब. वो रिलैक्स रहता है, so it is easy for the bacteria to go up. So at that time it is particularly important. प्रेगनेंसी में तो हम लोग रूटीनली टेस्ट करते हैं यूरिन, बिकॉज सिम्टम्स नहीं रहते यूरिन इन्फेक्शन के, और अगर यूरिन इन्फेक्शन अनडायग्नोज रहे तो बच्चे को इफेक्ट हो सकता है. सो इन दिस इट इज इंपॉर्टेंट टू नो योर एनाटॉमी एंड टू नो द इम्पोर्टेंस कि आपको पानी पीना चाहिए. आप पानी इग्नोर ना करें. कि ऑफिस में बैठने से, एसी ऑफिस है, अरे पानी पीने से बार बार वो गंदे बाथरूम में जाना पड़ेगा. आई वुड से दैट आप वो गंदे बाथरूम में जाइए, आपको वो गंदा बाथरूम यूज करके यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको यूरिन होल्ड करके यूरिन इन्फेक्शन होगा. सो दिस इज वन स्टेप इन इंटीमेट हाइजीन दैट वी मिस आउट ऑन, कि यूरिन ना होल्ड करो, ड्रिंक अबंडेंट वाटर. एंड इनफैक्ट राइट नाउ मुझे अभी ध्यान आया दैट आई शुड इंट्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट ऑल्सो. This is I don't know how many products are there. This is a product by Peabody which I always carry in my purse. Okay, yes. Now this has helped me in my road trips. I personally मुझे पब्लिक टॉयलेट यूज करने में प्रॉब्लम नहीं होता है उतना ज्यादा, बट दिस गाय रोड ट्रिप्स में यू कैन स्टैंड एंड पास यूरिन. अगर आपको, एंड आई हैव स्पोकन टू द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी एंड ही सेड उनका एक और इंटेंशन था कि जिन लोगों को आर्थराइटिस है, जो लोग यू नो बेंड नहीं कर पाते हैं अपनी नीज, उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होता है. सो दिस इज अ फनल, ठीक है, ये डिस्पोजेबल वाला है. अगर आप ओल्डर औरत है, आपको नी में इश्यूज है, आप बेंड नहीं कर पाते, आपको कमर का इशू है, you can stand and pass urine. Now, and I have used this. I use it specifically to make a video on UTI. मैंने ये specially उसी के लिए खरीदा था कि yeah, I remember that. I remember that. I'm sorry to interrupt, but I remember that you were talking about this and you said that you're never scared about using the public loo anywhere. So this is one of the scary thing, you know, that every woman, every girl has to think about when they're traveling by road, or if they are even working somewhere where the washrooms or the loos are not clean. So women are generally more hygienic, I feel. They get scared fast. Yeah. Germs. Yeah. So this thing you suggest for women, those who want to use public loo, or even if they're working somewhere and the loo is not clean and hygienic. Yes. But tell me something, like if we talk about challenges, this was something for the not related to menstruation, but let's come back to one thing. Like suppose if we talk about the menstruation challenges, okay, not in that gloomy way, but normal menstruation challenges that young girls face in some kind of rural area. If you consider, अगर rural area पे हम जाते हैं तो वहाँ एक अलग तरह के challenges हैं. और अगर नॉर्मल हम अपने सोसाइटी के पॉइंट से भी सोचे तो वहां पे भी उनको थोड़े बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करने के लिए ये दोनों एरिया पे आपका अपना क्या एडवाइस होगा, बेसिक जो बेसिक केयर उनको करना चाहिए. राइट. तो रूरल एरिया में ये प्रॉब्लम है, मेंसेस को लेके कपड़ा यूज करते हैं बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड दिस. ये 80 रुपीज के अगर 10 आ रहे हैं पैड्स, दे कैन नॉट अफोर्ड. दिस इज हाइजीनिक एंड इट्स इजी टू यूज. दे कैन नॉट अफोर्ड इट. तो उनके लिए मैं रेकमेंड करूंगी, अगर आप क्लॉथ पैड्स यूज कर रहे हैं, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एट आरटीसी इन कर्मा फाउंडेशन कि आप लोग क्लॉथ पैड्स बना रहे हैं विद अफोर्डेबल. तो एक वो है, एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल हु आर टीचिंग कि अपने क्लॉथ पैड्स खुद बनाओ. बट द प्रॉब्लम इज, अगर आपने क्लॉथ पैड बनाई है, उसके बाद क्या? आर यू हाइडिंग इट अंडर, दूसरे कपड़ों के नीचे हाइड करके आप सुखा रहे हो?
उसका सनलाइट का तो एक्शन आ ही नहीं रहा है उस पर, एंटीबैक्टीरियल एक्शन तो आ ही नहीं रहा है, वो सनलाइट ही किल करेगा। सो अगर माएँ और अपने घर के बड़े, घर के आदमी ये रिस्पेक्ट करें कि ये नेचुरल चीज है, ये हर औरत को होती है, इसी से वो शी जॉइन्स द रिप्रोडक्टिव साइकिल, इट इज समथिंग वी शुड Yes, वेलकम absolutely. औरत में। अगर हाँ. आप वो उसको हाय कितनी नापाक है, कितनी उनकी और है, कितनी अशुद्ध है, वी नीड टू चेंज दैट पर्सपेक्टिव। एंड if if you're not allowed to hang it over there, at least आप एक दूसरा बालकनी में ढूंढ लो, आप दूसरे कपड़ों के साथ मत रखो। अगर आपको खुद को ही थोड़ा गंदा लग रहा है, बट लेट द क्लॉथ पैड गेट सनलाइट, दैट विल हेल्प इन ड्राइंग इट फास्टर। आपको इन्फेक्शन, रैशेस, फंगल इन्फेक्शन से आप बचेंगे। एंड अदर देन दैट, अगर आपको उससे भी एम्बेरसमेंट है, देयर इज अ न्यू थिंग कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल कप। Now, this is very good for the environment. At least अभी तो ऐसा लग रहा है it's very good for the environment. Let's hope side effects don't come up. But this menstrual cup एक one time investment है। ये वाला शायद 400 रुपीस का था। There are other brands also, कुछ 800 के रहते हैं। सुनने में तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, बट आई थिंक पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड मोर एंड दे आर गेटिंग देयर प्रायोरिटीज राइट। तो अगर आपको हाइजीन के इश्यू का प्रॉब्लम है, आपको कॉस्ट में प्रॉब्लम है, आपको एनवायरमेंट का सोच रहे हैं, यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन। पर्सनली आई हैव ट्राइड टू यूज इट, आई हैव हैड फेस सम प्रॉब्लम, तो मैं नहीं यूज कर पाई हूँ उसको कंसिस्टेंटली, because I had to double up with the pad. थोड़ा लीकेज प्रॉब्लम था, but I know so many people who have been able to use it, and once you go cup, no, you really cannot go back. It is so comfortable, आप भूल जाओगे आपके periods है। Yeah, I've इसको got this feedback from many women. Huh? yeah, and even I want to go back to this, but only thing is, I'm not able to find the perfect fit. So maybe in the future, I have changed already too, and I was not able to find the perfect fit, and pad भी use करना पड़ा था। So I was like, what's the point? ना इसका कंफर्ट ना उसका कंफर्ट। सो इसको यूज कैसे करते हैं? फर्स्ट, नो योर एनाटॉमी, इसलिए मैंने शुरू किया था। देयर आर 3 ओपनिंग्स डाउन देयर, सो वेयर टू इंसर्ट इट, इट मैटर्स। एंड इसको ऐसे यूज करते हैं, जस्ट pinch it like this and fold it, and it is Okay. inserted inside. You don't have to use any jelly, any lubrication, कुछ नहीं, वो अंदर चला जाता है। Now I'll tell you my personal experience and the personal experience of few mothers कि पहली बार जब डाला था, ऐसा लगा था ये क्या हो गया, like I had I think Dr. Farah का कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया है. Just back. So the point she was mentioning, I came to know from many women that this is one of the best thing which has been found. और मुझे ऐसा लगता है टिल जब तक डॉक्टर फरा वापस कनेक्ट होती हैं, थोड़ा सा जो मेरी तरफ से फीडबैक ये रहेगा कि दिस इज रियली समथिंग विच इज वर्थ ट्राइंग। अगर हम लोग भी रूरल के एरिया में भी देखा जाए, अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से अगर देखें जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैनिटरी पैड्स, अगर ये उसके कंपैरिजन में ज्यादा आइडियल परचेज लगे या आइडियल लगे प्रोडक्ट, तो फिर वी शुड आल्सो स्विच ओवर टू दिस। द ओनली थिंग इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको यूज कैसे करते हैं, और वही डॉक्टर फरा बता रही थी। एंड अनफॉर्चुनेटली सीम्स हर there is some technical issue. We can wait for some time. Till Dr. Farah joins, अगर हमारे viewers के कुछ comments हैं या कुछ questions हैं, तो please share your questions. We'll be taking them up in the session as soon as she joins. व्यूअर्स, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप शेयर कर सकते हो और हम इनको एक एक करके ले सकते हैं। डॉक्टर फरा विल बी जॉइनिंग सून। आई थिंक सम टेक्निकल ग्लिच हैज हैपेंड।
Am I back? Am I back? Yes, yes, you're back. As usual, it's funny, you know. Dr. Farah? And the thing is, many of us have felt that the first time we use it is it goes inside, it just sits. And थोड़ा सा इसको ऐसे दबा देंगे. डॉक्टर फरा, आई थिंक अभी भी आपके यहाँ इंटरनेट का कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है. Is it working now? Yeah, you're back. Thank you. All right. Hello, guys. I'm really sorry for the interruption. And I'm going to go back to telling you about menstrual cup ka honest review, my experience with it, and why I was not able to be successful. Iska ek pointed tip hai, ye wale. This is, I think, Sirona cup. There's another one I have, Boon cup, jiska ye pointed tip nahi hai. One of the ladies told me ye cup inko nahi chala tha, unko round wala chala tha. So it's really a personal preference. Some people prefer this stem. ये स्टेम प्रेफर करते हैं, उनके लिए विड्रॉ करने के लिए आसान होता है. So the simple way to remove it is put your clean fingers inside. इसको हल्का सा pinch करो and you just pull it out. तो ये जो vacuum seal create हुआ था, वो चला जाता है. And it will come out easily. It will come out very easily. And then you just drain it and that's it. Wash it with warm water. बस है, you can use it again. And the beauty of this is कि आप जब नॉर्मली हम पीरियड्स में व्हेन वी गो टू द लू, हम लोग बाथरूम जाते हैं अपने आप को रिलीव करने के लिए, दैट टाइम वी सी दिस एंटायर मेस एवरी सिंगल टाइम, राइट? आप यूरिन के गए हैं, आप टॉयलेट के गए हैं, देयर इज ऑलवेज अ मेस and you might have to change your pad or maybe you don't, it's up to you. But with this you can go to the loo and actually feel like periods nahi chal rahe kya. It's like that. That was one of the best feelings, you know. You just go to the loo, you want to go for urine, you just go and do it and come back. And I love this about this. तो अगर आपको नहाना भी है, अगर आप स्विमिंग करना चाहते हैं, for that this is very very good. Menstrual cup. एक बार आप ये सीख गए, इसका छोटा सा लर्निंग कर्व होता है. Once you master it, you learn it. And it is not like कि सिर्फ मैरिड औरतें या माएँ यूज करें इसको. Young girls, teenagers can also use it. It comes in a smaller size for them and it can be used. Another alternative which is more common in the West is the tampon, which I have over here. So ये tampon, this one is the open tampon. And this is very similar to the menstrual cup. दोनों अंदर जाते हैं, correct? And once you, this is cotton and it just pulls up and you remove it. And this also has the advantage of a menstrual cup कि इसको आप निकाल के, but this doesn't have that environment friendly. Plus इसमें अगर अंदर भूल गए आप, इसको निकालना भूल गए, then it can infection इसमें develop होके it can be very very harmful for the woman अगर 12 घंटे से ऊपर भूल गए तो. So this also has its place. जो comfortable है आप ये use करो, जो इससे comfortable है आप ये use करो, and जो इससे comfortable है आप ये use करो. ये तीनों, these are the three options. I don't have a cloth pad. Cloth pad is
हायर मेंटेनेंस, आपको वॉश करना पड़ता है, बेटर फॉर द एनवायरमेंट। एंड जिन लोगों को पसंद है प्लीज यूज इट, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सैनिटरी नैपकिन जो फेंकने पड़ते हैं, go for the cloth pads. But whatever you do, make sure the hygiene is maintained. In case of cloth pad, by drying it in the sunlight, educate your men and women कि ठीक है, I won't say कि इसमें क्या है, natural है. No, it is awkward for people. It is a little awkward. The way you talk to your mother, you cannot talk to your father. आपके father को आप सादा बोल सकते हैं कि पापा napkins खरीदना है या पापा grocery store जाना है, आप लेके चलो जरा. Right? When you're a teenager, suppose. With your mother, you can tell everything. Mama cramps हो रहा है, ऐसा हो रहा है. So yeah, it is a little awkward to talk about these things. But then men should enable it कि बाहर सुखाइए, ये आपकी health का सवाल है. In the open. That doesn't mean कि झंडा लहराएं. Doesn't mean that also. Modesty is also there. But then it has to be enabled by the entire society as a whole. हम ये नहीं कह सकते हम we are broad-minded. We cannot just say we are broad-minded. अगर सामने वाला नहीं है, we only will feel awkward, right? So that's why Ranjana ji insisted in the beginning, please share it with the men, please share this information with everybody out there. And अभी तो सबके पास इंटरनेट है, रूरल में अगर ये ज्यादा देखें तो लोगों को समझ भी आएगा कि yes, it is not something to be scared of, it is not something impure, it is a natural function and we all hate it from the bottom of our heart. ओके, सो हाइजीन की जब हम बात कर रहे थे अभी फिलहाल, तो उसमें एक बात और है कि कई बार क्या होता है, बाय इग्नोरेंस मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे टेंड टू नॉट चेंज देयर पैड्स फॉर लॉन्ग लॉन्ग आवर्स. उस केस में भी व्हाट इज योर से, लाइक ये सच में बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक हो जाता है उनके लिए, या कितने आवर्स का उनको केयर करना चाहिए? बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, स्पेशली फॉर द स्पोर्ट्स गर्ल्स दोज हु प्ले स्पोर्ट्स, उनके लिए मुझे हमेशा लगता है कि दे हैव टू प्ले हार्ड, दे लिटरली उनको फिजिकल एफर्ट बहुत डालना होता है खेलने में, उनको कहीं पे भी जाके लू यूज करना होता है, वो ट्रैवल कर रहे होते हैं पूरे क्राउड के साथ, अपनी टीम के साथ, तो उनको उतनी सारी फैसिलिटीज कई बार नहीं मिलती है जो कि उनको नॉर्मली घर पे मिल जाता है. ठीक है, सो दे टेंड टू आइदर नॉट चेंज देयर पैड्स और दे टेंड टू अवॉइड सर्टेन हाइजीन, जो बेसिक हाइजीन उनको मेंटेन करना होता है. उस तरह के मोबिलिटी के ड्यूरेशन पे व्हाट इज द इजी हैक वे, हैक तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन एज अ डॉक्टर व्हाट वुड यू सजेस्ट कि उनको ये चीजें थोड़े मिनिमम में ये चीजें तो जरूर करना चाहिए ड्यूरिंग ट्रैवलिंग और व्हेन दे आर नॉट एबल टू चेंज द पैड, उनको चांसेस नहीं मिल रहे ऐसे टाइप्स में हाइजीन की कैसे? अगर आप स्पोर्ट्स लेडी है तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू विल बी टैम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप. इट इज मोर कंफर्टेबल देन अ पैड बिकॉज पैड भागते हुए सरक जाता है, वो दब जाता है एंड यू नो स्टेनिंग का चांस ज्यादा रहता है पैड्स में, राइट? So I would recommend to go for cup. And if you're comfortable with cup, अगर आपने आपके practice session में cup use किया है, you will be comfortable to use. But then every 6 to 8 hours at least आप change करें. And आजकल तो hand sanitizer की सबको आदत भी पड़ गई है. So suppose you are going दूर जा रहे हैं, आप बस से जा रहे हैं आपके sports event के लिए, and you're using the cup. This is what you're opting for. तो आप इसको sterilize कर लिए हैं. This has to be sterilized once in a cycle only. मंथ में एक बार इसको बॉइलिंग वाटर में स्टेरिलाइज करें, दैट्स इनफ. एंड आई वांट टू ऐड अनदर टिप ओवर हियर. स्टेरिलाइज करते ही जैसे वो ठंडा वो यूज ना करें, लेट इट कम टू द नॉर्मल शेप एंड स्ट्रक्चर. वैसा पिचक नहीं जाता है बट इसका सॉफ्टनेस बढ़ जाता है. इसका जो मटेरियल का सॉफ्टनेस बढ़ जाता है, तो वो उसका जो इसको सॉफ्टनेस की भी जरूरत है एंड इसको थोड़ी रिजिडिटी की भी जरूरत है, थोड़ा हार्डनेस की भी जरूरत है ताकि वो एक जगह बैठे. इफ इट्स टू सॉफ्ट ऑल्सो लीकेज कैन हैपन. So this thing आप रूम टेम्परेचर पे आराम से आने दीजिए. पीरियड्स के आसपास 2 दिन पहले से उसको स्टेरिलाइज कर दीजिए बॉइलिंग वाटर में, या पीरियड्स के एंड में स्टेरिलाइज कर दीजिए. आइदर वे इट्स फाइन एंड कीप इट इन अ क्लीन पाउच. एंड इसको यूज करा है अगर, तो आप कोई भी वॉशरूम में अगर जाएंगे तो दिस विल बी इजियर टू यूज. आप क्या सैनिटाइज कर लीजिए अगर आपको सोप नहीं मिल रहा है. अभी तो सबके पास सैनिटाइजर होता है. सैनिटाइज कर लीजिए एंड वॉश इट विद क्लीन वाटर. तो बिस्लरी का पानी लेकर इसको वॉश कर दीजिए. बेयर मिनिमम वॉशिंग. No hot water, no soap, nothing. Wash it and insert it back. This will be the best option for you compared to pad. अगर आप tampon use कर रहे हैं तो also make sure you change it every 6 to 8 hours. 12 घंटे से ज्यादा तो रखना ही नहीं है. मजबूरी होती है, कभी कभी नहीं मिलता है, प्राइवेसी नहीं मिल पाती, टाइम नहीं मिल पाता है. And if you're using the pad, try to change it 6 hours, 6 to 8 hours max. इससे ज्यादा नहीं यूज करना है. एंड अगर आपको अभी if you're not having your periods, opt for this to stand and pass urine. This will really be a lifesaver for many girls. ठीक है, डिहाइड्रेशन भी होगा, उनको पानी की कमी भी हो सकती है, धूप में खेल रहे हैं,
exert कर रहे हैं, ऊपर से अगर आप urine भी hold करोगे, that is recipe for urine infection if you don't start these things. Okay, so regarding this intimate hygiene, especially for women, those who are in the phase of transition from menstrual phase to menopausal phase, ठीक है, जी. तो उस वक्त यूटीआई का बहुत ज्यादा उनको फियर होता है, बिकॉज ये सब जगह पढ़ भी लेते हैं और मेरे ख्याल से उनको थोड़ा एक्सपीरियंस भी किए होते हैं कि यूटीआई बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है। तो वन ऑफ द रीजन जो सब लोग ये जानते हैं कि हाँ मे बी मैं पानी कम पी रही हूँ, ठीक है, ये एक वन ऑफ द रीजन लोग सोचते हैं। सेकेंड, क्योंकि हाइजीन भी मेंटेन नहीं हो रहा होगा वहां पे, या ड्राइनेस हो रही होगी वहां पे। सो इन मेडिकल टर्म, इन फ्रॉम योर एस्पेक्ट, अगर उस फेज में कोई विमेन जा रही है और उसको पहले से ही हेल्दी रखना है अपना वो पार्ट, और उनको रखना है हाइजीन मेंटेन रखना है अच्छे से, so then that time what is the suggestion ki only water cannot be, I don't think so only the water can be the main reason of all these, there should be something else also which they might be avoiding, which they don't know, so wo kya aap bolenge isme? Okay, so menopause, I think more than just anything, it is a very big push into irrelevance. इसका ये मतलब है menopause ऐसा बनाया गया है मीडिया में, बुक्स में कि अब तो तुम यूजलेस हो, अब तो तुम्हारा तो कुछ काम ही नहीं सोसाइटी में, तुम बच्चे नहीं जन सकते तो तुम्हारा काम क्या है? नो. इन फैक्ट आई हैड अटेंडेड वन सेमिनार, शी इज लाइक माय गुरु, डॉक्टर सल्दाना का, एंड शी सेड मेनोपॉज औरत को ना इस किस्म की लिबर्टी देता है कि अब, and these are actual hormonal changes happening in a body, chemical changes happening in a body which make her feel like अब मुझको सास ननद के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, I don't have to depend on the family unit, and she becomes, I want to use the word badass at this point of time. Because जब हम माए रहते, especially छोटे बच्चों की, we realize the dependence with our society. हर किसी के साथ हमको अच्छा रखना पड़ता है, and plus we are in the phase. But when you reach that age, you know, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप थोड़ी शेरनी भी बन गए हो हस्बैंड के सामने तब तक, and when menopause comes, and that time you're like, अब मुझे सोसाइटी से कुछ नहीं, सोसाइटी has treated us that way, and we are also like, now we don't care. Okay, I'm not saying all women, but that happens. Yes, and that thing that we don't need to depend on anyone, we don't need to keep our mouth shut, really comes along in menopause. दूसरा है mood changes बड़े होते हैं, तीसरा है physical changes in the vaginal lubrication, intimate life सब affect होती है, तो mood changes होते हैं, तो that the best thing to do at that time is for the husband कि जरा बच के रहो. There's no other option. Because हम हर PMS में husband has to be बच के रहो, please, right? So don't provoke her because she is undergoing some pain, some hormonal changes. It's a big thing for her. Plus, you know, you start to realize your age is setting in. It's not easy for a woman. You know, she'll get some white hair, chin hair. That is a very disturbing thing for a woman. That, you know, the white chin hair when they start coming, and it is, we're conditioned to think, oh my God, my life is getting over. Oh my God, I'm beginning to be useless in the society. And that's what makes us more of tiger moms. That's what will make her more of a tiger mom ki she wants to hold that place because she's not irrelevant. क्यों भाई? बस वो यूट्रस की फंक्शनैलिटी पर हम तो रेलेवेंट नहीं बन सकते ना. वी आर ऑलवेज रेलेवेंट, नो, इवन व्हेन वी आर 90, इवन व्हेन वी आर 9 months old. A woman, a man, any human being is always relevant. It's a societal construct. Society ने ऐसे बना के रखा है this rubbish concept of menopause and like ढल गई जवानी and stuff. And another reason why कि UTI बढ़ते हैं is because of the anger and the stress that is accumulating. Hormonal changes की वजह से, and I said right, you get a release from that societal construct, and that woman feels a little liberated. तो ये जो stress का effect आता है वो bladder पे आता है in the form of inflammation, which is called cystitis. And in fact हम जब ज़्यादा stress लोग आते हैं हमारे पास, यूरिन कल्चर करके देखेंगे तो उनका यूरिन इन्फेक्शन, जो उनको बार बार यूरिन जाने का मन है, जलन हो रही है, वो उसमें बैक्टीरिया तो है नहीं. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? इट इज जस्ट इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर. आपका जो यूरिन की थैली है, जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, वो इन्फ्लेम हो जाता है. और वो क्यों हो रहा है? स्ट्रेस की वजह से. एंड हाउ डू यू गेट रिड ऑफ इट? पहले तो वो यू नो वी गिव टैबलेट्स टू रिड्यूस दैट स्पाज्म एंड द इन्फ्लेमेशन. वो जो ब्लैडर एकदम ऐसा जकड़ गया है, and it's just like, you know, you feel like passing urine every 5-10 minutes, even though there's hardly anything to pass, right? That frequency symptom ke liye we'll give some tablet. And I went through this stress-induced cystitis in my final year exam in MBBS.
एंड आई रिसेंटली हैड अ पेशेंट जिसका बच्चा बोल नहीं रहा था और किसी ने उसको डरा दिया था बोल के कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है, वो बस 2 साल का था. सो शी वाज हैविंग बार बार वो सिम्टम्स एंड उसका कल्चर नेगेटिव आया था. एंड आई आस्क्ड हर कुछ हो रहा है क्या घर पे, सो शी टोल्ड मी एंड शी स्टार्टेड क्राइंग एंड literally counseling treated her urine infection, not tablets, not antibiotics. So just taking antibiotics is also going to mess up with you more because antibiotics did not discriminate. They don't check कि अच्छा बैक्टीरिया कौन सा है, बुरा बैक्टीरिया. एंटीबायोटिक का काम है बैक्टीरिया को मारना. और आपकी बॉडी में आप आधे इंसान हो, आप आधे बैक्टीरिया हो. यू हैव दैट मच बैक्टीरिया इन योर बॉडी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी टू फंक्शन. वजाइनल कैनाल में बैक्टीरिया है, आपके स्टमक में बैक्टीरिया है, आपके यूरिनरी ब्लैडर में बैक्टीरिया नहीं होता है. जब वो हुआ तो दैट टाइम इट्स इन्फेक्शन. यूरिन इज एक्चुअली स्टेराइल. So, and when there is bacteria, that's when this infection happens. So, fungal infections बढ़ सकते हैं, indiscriminate in fungal infection in the vagina. ये सब बढ़ सकता है indiscriminate use of antibiotic, thinking कि आपको urine infection हुआ है. So, please get help to reduce your stress. There are tablets जिससे आपको थोड़ा better feel होगा, चिड़चिड़ापन कम होगा, आपके moods थोड़े better होंगे. For that मैं कहूँगी आप अपने gynecologist से बात कीजिए, accept कीजिए कि menopause is a part of life. It is not the end of life and I have to hold on कि मुझे वापस आना है life. It is not. It is just something, something we should celebrate कि finally this is gotten over. Periods खत्म हो गए हमारे. And at that point, then, one last thing. इस बात में मुझे ये बात याद आया. See, most of the disease what we presume is psychosomatic. ठीक है, जैसे as you said कि स्ट्रेस के कारण इवन यहाँ ये एक्सपीरियंस करना पड़ता है उनको. ठीक है, विच मुझे लगता है बहुत हार्डली कोई लोग जानते होंगे. So I have a network of people like women basically जो जिनको menopause already आ चुका है. They are very healthy, very fit. They are runner, they are marathon runners. And उन्होंने बोला they never realized when it came in their life. एंड उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया बिकॉज दे वर सो मच इनटू रनिंग एंड उन्होंने अपनी बॉडी को एक्चुअली में चैलेंज किया क्योंकि आप 50 के एज में दे आर रनिंग 47 किलोमीटर राइट. तो मुझे लगता है व्हाट द पॉइंट यू सेड वाज कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज साइकोसोमैटिक. तो विमेन पहले से ही घबराने लगती हैं द मोमेंट दे एंटर इन 40s दैट अब मेनोपॉजल आएगा. वो अच्छा एक वुमेन दूसरे वुमेन को ज्यादा रियलाइज भी कराती नाउ यू आर इन 40s सो प्रोबेबली अब मेनोपॉज आ रहा होगा. हाँ, सो मुझे लगता है यहाँ पे भी थोड़ा सा हमको चिल आउट हो जाना चाहिए. एंड सेकेंडली अगर आपका मेनोपॉजल फेज आ भी गया है इफ यू आर इन्वॉल्व विद गुड थिंग इन योर लाइफ लाइक कंस्ट्रक्टिव थिंग वेयर यू डोंट फील दैट जैसे कि मेरा अकाउंटेबिलिटी सब जगह है लेकिन मेरे को खुद को मेरे लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं है. तो अगर आपने पहले से अपने आप को डिप्राइव कर रखा है उस चीज से तो शायद ये मेनोपॉजल सिम्टम्स ज्यादा होंगे, यूटीआईज आपको ज्यादा होंगे. लेकिन अगर आपने अपने आप को किसी चीज में बिजी रखा है, आप उसको इतना ज्यादा सीरियसली और ग्लूमी वे से नहीं देख रहे हैं तो और फिजिकल एक्टिविटी आपकी अच्छी है तो मुझे लगता है ये चीजों से आप बच सकते हैं. बिकॉज मैंने काफी 50s में लोगों से बात की थी एक बार तो मुझे यही रियलाइज हुआ कि दे आर जस्ट लिविंग द वे दे वर लिविंग 10 years बैक. दे वर नॉट सो मच इन स्ट्रेस लाइक दैट. तो ये पॉइंट आपकी अच्छी थी कि स्ट्रेस नहीं लो, अपने आप को थोड़ा सा इस मामले में अपने आप को ऑक्यूपाई करके रखो. और बैक्टीरिया की जहां तक बात है इंडियन हम लोग के उसमें कहते हैं कि आई डोंट नो आई जस्ट हर्ड इट. तो ये डॉक्टर के पॉइंट से आप बोल सकते हो इसके बारे में. विनेगर और सम अदर होममेड थिंग्स आर देयर जो इस तरह के बैक्टीरिया अच्छे बैक्टीरिया को आपके बॉडी में रखता है. जैसे विनेगर बेस्ड चीजें जो घर पे विनेगर की बेस्ड चीजें हम लोग रखते हैं या दही प्रोबायोटिक काइंड ऑफ स्टाफ व्हिच दे शुड टेक so that अच्छा बैक्टीरिया जो है उनके बॉडी में रहे and they should not experience this UTI of it. I don't know how much true is this लेकिन हम जैसे मेरे तो में हो ही जा रही है थोड़ी बहुत चीजें. Okay, so this is very important because हम जो खाने को फर्मेंट करते हैं, पिकल करते हैं, उस विटामिन B12 और उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बेसिकली सारे विटामिन बी एंड उसमें गुड बैक्टीरिया दैट रियली हेल्प्स. नाउ इसका एक और एडवांटेज ये है kombucha मत पीजिए. एक जो इंडिया में आ रहा है और मैं बहुत बाल में समथिंग कॉल्ड kombucha बट डोसा वी हैव एवरीथिंग इन आवर किचन. हमारे पास फर्मेंटेड चीजें बहुत है. वी डोंट नीड टू बोरो समथिंग फ्रॉम अदर्स. हाँ, अच्छी चीज बोरो करो बट ऐसा नहीं कि अपनी अच्छी चीज आप भूल जाओ. जब तक कोई गोरा इंसान आके तुमको ये ना बोले दिस इज टर्मरिक or drink turmeric latte. We don't need them to tell us and then they put like 1 spoon and then we said एक चुटकी डालो भाई
and then we put 1 teaspoon and we get acidity. जो अच्छा अच्छा है. And I won't say this is a little different, but I'll get to the point. लूंगी इसके लिए. आज मैंने headline पढ़ी, medicine is used for flour. Only my husband की सुपर फूड चीज है. भगवान ने हर चीज एकदम सुपर बनाई है. जब तक कोई साइंटिस्ट बैठ के उसके मॉलिक्यूल करके आप बताएगा नहीं कि ये सुपर फूड में खाओगे नहीं. हर चीज खाओ, हर चीज मॉडरेशन में खाओ. आप काढ़ा लोगे, आप हल्दी, आपको आप वो जहर बन जाएगा. तो आप कम करोगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा. आप ज्यादा करोगे तो वो जहर बन जाता है. हर चीज और पानी तक जहर. एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू रियलाइज. हमारे घर में हर चीज है. हमारे घर में हर चीज. लोकल सीजनल खाओ. Don't try to copy. Yeah, you try to get inspired. You can learn from other people. You adopt their customs. But खुद का मत छोड़िए. And in fact, the very important thing about fermented food is कि आपका पेट का फैट बीपी, हार्ट डिजीज देता है. वो चर्बी घटाने में भी कम, जो पेट के ओबेसिटी को कम करता है फर्मेंटेड फूड्स. Now, अगर इसका हेडलाइन बना, everyone is going to have idli dosa only from next time. But that's the point I'm again trying to make. ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो आपका लाइफ सॉल्व कर देगी. लाइफ है ही ऐसी जो सॉल्व नहीं. You have to keep living it. कि या किया तो आपका कंप्लीट है, बिकॉज वो होता ही नहीं. There'll be some other problem. So take everything and take it with respect. Take it as a blessing and use it. ऐसी कोई चीज नहीं कि ये बेकार है. अब पकौड़े खाने बोलेंगे वो लोग बेसन के नाम पे. And it will come as gram flour fritters. देख करो 1-2 महीने में वो भी आएगा. Gram flour fritters. Very good for health. भजिए के पकौड़े. So everything is a superfood. Please take everything the way your mother teaches you. Yes. Not just internet. So what about the products which is available for intimate hygiene available in the market and many big celebrities are endorsing? What is your say? Yeah. I'm not going to name them, but there are lots of wash available, in the market. I do not like this concept कि vagina को clean करना. हर ad ऐसे वो सुन के गुस्सा आता है. मुझे ad से प्रॉब्लम नहीं है. मुझे तो in fact I love the actors who endorse. I'm a big fan of this. But the ad starts with हम औरतें हर चीज का ख्याल रखते हैं. हम अपनी intimate hygiene का ख्याल नहीं रखते. 1 second. Doctor over here, I have examined. I do that on a daily basis for a living, and I don't think I have seen one more hygienic than Indian women. There's no competition only, bhai. I'm an Indian woman. My mother is an Indian woman. My relatives are Indian women. My mother-in-law, we take care of hygiene. ये बोलते हैं product कल मत. Secondly, products are very loosely regulated. They're very loosely regulated. There is no FDA regulation for it. They have no accountability. तो वो लोग कुछ भी कितना भी perfume डालेंगे, it's not regulated. And अगर आपने वो वीडियो देखा होगा मेरा intimate hygiene का, where I tell कि ये products they disrupt the bacteria over there. बैक्टीरिया नहीं है. आप जो खुद के सेल्स है, खुद सेल्स है. Dr. Farah, आपका नेटवर्क में थोड़ा इशू आ रहा है. The voice is not very clear. What I could recall is हमें इतने जो endorsed products होते हैं उसके पीछे इतना नहीं जाना चाहिए, because हमारा by default जो है normal water is enough to go for it. Like we don't need such products which is being endorsed by big celebrities. That is what I could recall. Is it? Am I back? या जो मतलब यही है ना कि जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो एक्चुअली में क्लीन नहीं करते. हमारे जो नॉर्मल वाटर का है, जो वाटर वॉश होता है नॉर्मल, वो इनफ है. एंड वो जो क्लीन करते हैं वो बेसिकली वो एरिया से आपके अच्छे बैक्टीरिया भी चले जाते हैं. दिस इज व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड, राइट? Yeah, that is also there. But then again, which मैंने जब इसको फिर से पोस्ट किया था, and some people who talk about menstruation solely, I want to give the second side of the story also. They posted it too, and we got comments saying that मेरे gynecologist ने ये prescribe किया था और मुझे इससे फर्क ही पड़ा है. And I told them I need to read more to find out, because I will not speak against my professional community, because that's not right. उन्होंने कुछ सोच के ही किया है. Maybe some of them could be misinformed decisions, some of them could be because अच्छा ये अच्छी चीज है, I don't know, but there could be medical indications also for this.
लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम अगर हमारे लोगों को कहते हैं आप अल्कोहल ना पीजिए, राइट? दैट इज नॉट द आंसर टू एवरीथिंग. अब वो जाके देसी दारू पिया और वो मेथनॉल निकला जिससे वो ब्लाइंडनेस होता है, उसका क्योर क्या है? अल्कोहल. Normal alcohol is the cure. That's what I'm telling. We do not know for I as a person, I have researched this thing and I found out कि this is not good for you, especially अगर आप baby plan कर रहे हो, ये अच्छी चीज नहीं है आपके लिए. But then again, if another gynecologist, not just one, there are many who told those viewers who came and told me, अब मैं किसकी बात सुनूं? I said just wait. Continue what your gynecologist said. I will get back to you with another video where I tell you कि कौन सी चीजें में intimate hygiene washes will be indicated. So we need to balance it out. ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी बुरी चीज है. That's why I gave that alcohol example. पूरी बुरी चीज है. जहर को काटाना, it's that way. So we need to always see the risk-benefit ratio. I wouldn't recommend you use it daily. Maybe for some conditions, those intimate washes can be useful. And the actors who are endorsing it are not medical professionals. So let's take them for entertainment value as people who have a brand value. But let's not blame them for endorsing these products. They don't know better. It's as simple as that. True. So, अगर normally आप पूछा जाए कि intimate hygiene के point से कि what are the basic things which every girl, every woman at any stage of their life, at any age, should follow on regular basis. What is your say? Regular. Okay. One thing we are missing out actually on is the advantage of the Indian toilet, the sitting toilet. Okay. And in fact, I prefer Western toilet too myself. But the most natural way of doing, I'm talking about defecation, potty, is to squat and do it. So maybe अगर आपके पास Western toilet आप उससे ज़्यादा comfortable हैं, a stool to raise your legs, that will be very good for your overall life, for the long-term health. Now, the second thing is wash yourself with water. Toilet paper is not the answer, but then again, it depends on where you are. Toilet paper is always wash yourself with water. It should be flowing water. That is advantage. Wash from front to back, never back to front. आप faucet पीछे से use ना करें, आगे से पीछे. And don't use soap multiple times a day. This is very important क्योंकि इंडियन औरतें ओवर हाइजीन का मुझे ज्यादा प्रॉब्लम है. मुझे अंडर हाइजीन का प्रॉब्लम कभी मैंने फेस नहीं किया है. मैंने ओवर हाइजीन का प्रॉब्लम फेस किया है बिकॉज वो इतना सोप यूज करते हैं ट्राइंग टू कीप देमसेल्व्स क्लीन कि उनको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है. क्योंकि जो अच्छे बैक्टीरिया है वहां के वो मर जाते हैं एंड फंगस गेट्स फ्रीडम टू ग्रो. So do not do over hygiene. अगर आपका and there is something called normal vaginal discharge. तो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा white discharge आता है which is keeping it healthy, flushing out bacteria, तो dry नहीं होने दे रहा है. So always pay some attention to your normal body functions also, because अगर आप देखेंगे आप middle of the cycle between two periods on the 14th 15th day आपका cycle अलग रहता है, right? In the middle of the cycle your this vaginal discharge will be like egg white. ऐसा खींचेगा वो. Okay? It will be like egg white. And close to periods, it will be little dryish, that discharge. So know the normal, so that when something abnormal happens, when there is itchiness, when there is curdy discharge, dahi के जैसा discharge जो होता है, that will hint at a fungal infection and you need to get medical help for that. और ऐसा नहीं कि अपने को कॉल करके तेरा प्रेस्क्रिप्शन लिखा मैं देखती हूँ and I'll use the same thing. Please see a doctor. You need to get examined. And after a certain age, आपको बच्चे होने के बाद आप pap smear करा लें. And another very important thing I want to tell is, and let's face it, these days girls are maturing faster, they're exposed to more content, and getting, we are not, many women are having intercourse before marriage, which is their personal choice. So if you're opting for that, please go for HPV vaccination, which is going to protect you in the future against cervical cancer, because HPV is a virus, human papilloma virus. Gardasil करके उसका vaccination आता है. If there's a young girl watching this and you are thinking of becoming sexually active, please get yourself vaccinated for cervical cancer. जो वैक्सीन होता है at 0 months, जैसे first dose होता है, 1 महीने के बाद दूसरा dose होता है, and on the 6th month, third dose होता है. So this is something you need to take care of. If you're planning to lose your virginity, if you're planning to get married, just get it. Just get that vaccination. Long-term effect अच्छा रहेगा. It will protect you from cervical cancer, from that HPV infection, which can be sexually transmitted also. Another thing is pap smear आप करवाइए. वो बड़ी important चीज़ है. Get your cervix. मैं बता करके दिखाऊँ? So okay. Vaginal opening. I'm drawing it over here. I'll show it to you guys. And उसके ऊपर cervix रहता है, and उसके ऊपर होता है uterus. Okay, this
This is the vagina, this is the opening, and उसके ऊपर है ये cervix. So this thing is what we examine जब हम पैप स्मीयर करते हैं. अब पैप स्मीयर से वहाँ से सेल्स लेते हैं एंड वी एग्जामिन देम कि कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं सर्विक्स में. तो वो सर्वाइकल सेल्स हेल्थी है, यू कैन प्रोटेक्ट योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. मेनोपॉज के टाइम पे दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट. अगर आपको मेनोपॉज राइट, 1 मंथ ब्लीडिंग कभी हुआ, फिर 6 महीने में हुआ, फिर से हुआ. सपोज यू गेट वेरी हेवी ब्लीडिंग सडनली अगेन, गेट योर सेल्फ चेक. एक तो आप पैप स्मीयर करवा लीजिए, गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, अल्ट्रासाउंड या फिर if it is heavy bleeding, it is important to rule out breast cancer. It is important to rule out fibroids. A sudden heavy bleeding at the time of menopause. Get it examined. ये मत बोलिए कि irregular होते आते जाते रहते हैं. Just get it examined. In fact, when you're entering menopause, get a full checkup done. Know the size of अगर fibroid है वो fibroid भी चला जाएगा जैसे जैसे menopause आएगा. You might not need that surgery to remove the fibroid. आपके heavy periods है. अगर you can endometrial cancer also आपके gynecologist decide करेंगे. मैं बहुत सारे cancer word बोल रही हूँ, please डरिए मत. It is not that common. Get yourself examined, and while you're at it, please get your breast examination also done. So just go for a wellness checkup, especially if you're about 35-40. A wellness checkup भी साल में एक बार अपने gynecologist से मिल लीजिए. So that will be to your advantage. And right after periods is the best time because that time you are sure you're not pregnant. So anything that needs to be done can be done at that point. Okay, so I think we covered almost all the questions, and if there is something which you would like to share, which is beyond these questions, you're open. You can actually do that. और अगर अभी आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, तो before we end, ये मेरा request है because I have heard lots of parodies in your Instagram account, और मैंने specially request किया था कि for our viewers here, we would be listening few lines from your side about this women and health. I believe आपने उसी में बनाया है. तो अगर वो ready है तो हम क्या ये सुन सकते हैं? Yeah, so I'll before I tell, I don't doctor singing suddenly at the end. So basically, मैंने parody last year से लिखना शुरू किया था. I didn't even know I could write parodies. मैं poetry लिखती थी, मैं writing करती थी, and एक दिन बस आ गया मुझे. And I wrote it, and then I didn't know how to produce the video. So मैंने wait किया कि जिस दिन सीखेंगे उस दिन बना लेंगे video भी, because it's a good. I like that parody. So I was like, let's not waste it. Let's keep it. And I write these parodies क्योंकि heavy messages ना अगर आप मजाक और मस्ती फॉर्म में देंगे लोगों को हजम होती है. एंड दैट इज हाउ इट बिगैन. और औरतें भी जो बहुत डिप्रेशन के थ्रू जा रही है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही है लाइफ में, एंड दे वॉच द पैरोडी एंड दे अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंसेस. रीसेंट मेरा सबसे रीसेंट पैरोडी था खाओ ना, वेयर आई टेल माय किड्स कि प्लीज खाना खा लो, कितना मुझे सताओगे, एंड पीपल वॉच दैट. एंड दिस वाज अ मॉम ब्लॉगर. आई एम नॉट अ ब्लॉगर बट अ मदर हु इज टेलिंग कि मेरे बच्चे भी नहीं खाते, मैं डॉक्टर हूँ, you know, and I'm the one supposed to be giving you advice on how to and what to feed your kids, but my kids don't eat. They ask for TV. They are kids after all, and even medicine cannot be anything. So yesterday they like the package just for you have parody on demand. Ranjana, There is some voice disturbance, Dr. Farah. There is some voice disturbance. Yeah, अभी fine. Yeah. So I wrote this. She wanted a very short one because this is an information session and something to do with periods. So this is for a girl. And after this parody, I'll cover that last point about menstrual cups for teenage girls. Okay. Right? Okay. Remember we had discussed that. So I wanted to do it as a song that everyone can relate to. So the song I've chosen is Leke Pehla Pehla Pyar, Bhar ke aankhon mein khumar. That song. I just hope the internet doesn't stop now. आया पहला पहला period, feeling very very weird. I am confused by all these sanitary product ads. Why is there so much pain? Can you just check for a stain? Should I use virginity to a cup or just go for a pad? Yeah. It's wonderful. See, that's what my intention was. You know, we should take things as it comes. Obviously, precautionary measures are always better in every area of our life. But still, अगर हम थोड़ा लाइट मूड पे लाइट बना के हर चीज को एक्सेप्ट करते चलेंगे तो वी वोंट get so much challenges as we feel always when we discuss about women health, right? So see, it was such a beautiful and such a funny kind of parody which you made. So it actually मुझे भी सभी को मैं सोच मुझे लग रहा है कि सभी लोग हंस ही रहे होंगे जो viewers होंगे. So I would ask them to follow your Instagram account which you can share here.
बिकॉज उसमें बहुत पैरोडीज होते हैं. Hi, Dr. Farah Weinstein. You can check on Instagram. I'm there. YouTube पे भी same name, Dr. Farah Weinstein. And this is the point that we missed, that we had discussed. Ki there's a Yes. big myth of losing virginity by using menstrual cup. हमने Okay. आज बहुत सोसाइटल कंस्ट्रक्ट के बारे में बात की है. हमने कहा है कि मेनोपॉज आप कैसे हैंडल कर सकते हैं. इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी एज हार्ड एज यू थिंक इट इज गोइंग टू बी. सेम थिंग कि please someone define virginity to me, then I'll tell you if you're going to lose it or not. Virginity is also a societal construct. Why only a woman is losing? A man can also lose. And just Yes. putting something for your own hygiene inside will not make you lose your virginity. It is not a question of your character. It's as simple as that. You're just being hygienic. And Yeah. who should judge you on your character? Nobody. Nobody should judge you on your character. You're a Yes. wonderful person. There is concept of virginity is the most confusing thing in the world. There are people जो अगर हाइमन की बात करें, हाइमन इंजर हो जाएगा. वो हाइमन बिना हाइमन की भी औरतें पैदा होती है. सिजेरियन डिलीवरीज के बाद भी लोगों के हाइमन इंटैक्ट होते हैं. 2 बच्चे भी हो गए, उनके हाइमन इंटैक्ट है. Hymen is not something that you need to worry about. Hymen is not something you need to hold dear. And there are people, because of societal pressure, who have, partners before marriage. And just because they fear कि उनकी mother-in-law या कोई है, will come and check for the hymen, which is a very disturbing practice for me. They can get hymenoplasty done, which is reconstruction of the hymen. It is very common because of the demand for it. So honestly speaking, you can fool anybody. And honestly speaking, your virginity or lack of virginity does not decide your character. Your kindness to other people, how good you are, that's what decides your character, nothing else. Not what you wear, not what cup you use, and not who you choose to love. Nothing defines your character. It's only what kind of a human you are defines your character. That needs a big conditioning of mind and transformation at every level in the society. So it was really wonderful, Dr. Farah. मजा आया और बहुत insight था. मतलब it was really at this stage of in my life also I came to know so many new things from you. Oh, I that's hope wonderful. viewers को बहुत अच्छा लगा हो और जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी रिक्वेस्ट किया था प्लीज आप इसको शेयर करें और जितनी नॉलेज आप स्प्रेड कर सकते हैं इससे रिलेटेड अपने आसपास लोगों को बिकॉज ये इंग्लिश हिंदी में मिक्स्ड है तो मेरे ख्याल से बहुत अंडरस्टैंडेबल रहा है ये सेशन सो दिस वुड बी द रिक्वेस्ट फॉर ऑल द व्यूअर्स और इट वाज रियली नाइस टू हैव यू Dr. Farah and hope to invite you again for some other session related to women health soon in I'll be future. honored. I'll be very honored to be associated with you guys again. And that is a wonderful job you're doing with the Sabarmati Jail inmates. After introduction ke baad, I didn't get a chance to say what a lovely job you guys are doing. Right to cleanliness, I just love that term because I think that is our basic right. And if you're implementing that, अगर आप implement कर रहे हैं एक prison cell में, so that's just applaudable. Thank you Really so much. salute you, RTC and Karma Foundation. And I'm so glad I got to do this session with you. कि हमारा last session हो नहीं पाया था आपके साथ. So Yes. it's lovely आपके साथ session हुआ. That I was waiting. वो unfortunately we couldn't collaborate for that. But अभी बहुत आगे भी हम sessions रखेंगे because RTC का main यही है कि overall hygiene पे भी हम सोच रहे हैं. It's not related to only specifically this menstrual hygiene. So probably next session हम dental hygiene पे सोच रहे हैं. And उसके बाद फिर again some kind of hygiene or some kind of health and wellness के point से हम आएंगे. So you will always be our most chosen one as a guest speaker. तो हम फिर फिर कोलैबोरेट करेंगे फिर उस पे सो थैंक यू सो मच डॉक्टर फरा एंड आई थिंक वी कैन एंड दिस सेशन फॉर नाउ Yes. एंड Thank you ओके थैंक everyone for यू joining. Bye bye.